Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 27th of June. Session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we are talking about few cabinet approvals. Then we will be talking about India's first AI powered smart traffic system, and you will be seeing this will be launched on Dwarka Expressway in Delhi. See, with the help of AI we will be seeing many things will be getting smart now. Then Ministry of Rural Development and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has signed an MOU to empower rural women self-help groups through skilling and entrepreneurship. And we will be talking about 417 crore electronic manufacturing cluster that has been set up in UP. Let's start, students. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with Cabinet Affairs. Union Cabinet, it is chaired by Prime Minister Narendra Modi, and this Union Cabinet has approved the proposal to set up a South Asia Regional Center of Lima in Peru based International Potato Center at Signa Agra in UP. So remember this. Then Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the revised Jharia Master Plan worth 5,940 crore rupees to deal with the issues that are related to fire, land subsistence and land rehabilitation of affected families in the Jharia coalfield. So this is for rehabilitation. Then third, Pune Metro Rail Project Phase 2, that is Vanas to Chandni Chowk Corridor 2 and Ramwadi to Wagholi. This is Corridor 2B. So these two has been recently approved. This is for Pune Metro Rail Project. Then fourth is passed a resolution to mark the 50th anniversary of the proclamation of National Emergency as Samvidhan Hatya Divas, and this was the second edition of the Samvidhan Hatya Divas that was observed this year. Right, so these are some of the approvals that you need to remember. Then further move on. India's first AI-powered smart traffic system has been launched on Dwarka Expressway in New Delhi. This Dwarka Expressway is connected New Delhi to your CPR, then to your SPR. These are the part of Gurgaon, or we call say Gurugram. Right? So this is a smart traffic system. It will be handling the traffic more efficiently, right? And it is a major step towards smarter and safer highways. This AI powered smart traffic system was developed by New Delhi based Inland Highways Management Company Limited, and NHAI is responsible for the overall implementation of the system on Dwarka Expressway. This is a data driven management system that will ensure the response time, faster response time, fewer delays and safer commute. This will be implemented over a 56.46 kilometer patch with 28 kilometers situated along the Dwarka Expressway and remaining on the NH48, that is from Shiv Murti to Khetki Dola, that is on this part only. Then this system is integrated with the Delhi based National Informatics Center developed e-Challan portal that will inform about traffic violations to the relevant police authorities, and from there you will be getting your challans, or you will be getting your paid dues that you have to pay or fines that you have to pay to the authorities. Right, you will be seeing here that traffic monitoring camera system will be implemented here. Then video incident detection and enforcement system will be here. Variable message signboards will be there, and central command control room will also be established for the same. If we talk about NHAI, students, that is National Highway Authority of India, who is the chairman of NHAI, Santosh Kumar Yadav, headquartered in New Delhi, established in 1988. Next is Ministry of Rural Development and MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. These two ministries have signed an MOU to empower the rural women self-help groups through skilling and entrepreneurship. Right, I repeat, the MOU has been signed to empower the rural women self-help groups. Right, here skilling will be there, entrepreneurship development will be given to them, and also market oriented livelihood support will be provided
right? Marketing help will be provided, and if they need anything in the help of financing, it will be provided. Mentorship will be provided to them, that how can they grow in the following business, and the target here is to make them Lakpati Didi, right? This is an initiative that will advance India towards Viksit 2047, that is Viksit Bharat 2047. And this MOU has been signed for 3 years, that means till 3 years these things will be talked about, and it will be worked upon these three things till we get a meaningful output. Correct? So for training them, various modules will be launched, right? Various skills certifications will be there, and also mentorship will be provided to the women entrepreneurs here, right? Then next is Government of India has approved 417 crore rupees electronic manufacturing cluster, that is in UP under the EMC 2.0 scheme. What is EMC 2.0? It is your electronics manufacturing cluster scheme, right? This is the 2.0 version that has been launched, and this electronic manufacturing cluster in UP under this scheme has been set up where it will be in the Gautam Buddha Nagar district, that is in UP. This new project, what it will do, it will drive innovation, it will promote manufacturing, right? Also, this newly approved EMC electronic manufacturing cluster project will be developed along the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. This cluster is spread over an area of 200 acres, and it is expected that it will be attracting an investment of 2,500 crore rupees. Moving on. Next is UAE and India CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement was signed, right? And the CEPA Council has launched a startup series to boost the innovation in these two countries, right? See, this we know that between India and UAE, this CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement, was signed, right? And during this only a startup series has been launched. Now what does this do is this will promote innovation. New startups will be coming, they will be doing research and innovation, they will be finding a product market fit. Then with the help of this only you will be seeing that new use cases of various already existing technology or new technology will be coming into the market. This initiative will enhance innovation driven ties and support the startups in expandingly globally under the framework of UAE India CEPA, right? Also, this event has signed a memorandum of understanding, or this event here between them saw a memorandum of understanding where academic institutions have also partnered together, so that cultural exchange of students can be there, or basically the researchers, the scientists, or the workers, the employee force, they can exchange themselves, so that it can enhance a sense of participation as well as cooperation between these two nations. Moving on, ECOR, that is your East Coast Railway, they have launched East Coast Railway Yatra application for Puri Rath Yatra pilgrims. I repeat, for Puri Rath Yatra pilgrims, right? East Coast Railway, they have launched a East Coast Railway Yatra mobile application that will enhance the rail services for the devotees that are attending the Yatra from 25th of June to 7th of July in Puri, Odisha. Direct question. Next, CBSE introduces biannual class 10 board exams from 2026 onwards. That means from 2026 onwards, class 10 students, they will be able to give board exams twice. That means in a single year, they will be able to give 2 times the board exam. What this will do is this will reduce the pressure on the students that are appearing for the board exams by providing them with 2 opportunities in a single year. This move aligns with the recommendation of the National Education Policy 2020. Take a note of this. Next is international affairs. IFCO has established the first overseas nano fertilizer plant in Brazil. This will be the first nano input plant in Brazil, right? It is IFCO. They have announced the joint venture with Brazilian company Nanofert, that is Nano Fertilizers, to establish this nano fertilizer manufacturing plant in Brazil. Take a note of this, students. Then next is banking and finance. India emerged as the top destination in the global south for the greenfield investment with $114 billion as per the data released by RBI, right? Top destination. We are the
top destination in global south for greenfield investment in the digital economy. This report stated that India received a total of $114 billion in the greenfield investment between 2020 to 2024. Now, what is this greenfield basically accounts for? This is basically your new projects that are working on green energy, that are utilizing the green source of energy, right? Apart from this, the gross inward foreign direct investment amounted to 8.8 billion in April 2025, higher than 5.9 billion dollar in March 2025 and 7.2 billion dollar in April 2025. Here, manufacturing and business services are accounting for nearly half of the gross FDI flow in India, and this surge in FDI positioned India as the 16th largest FDI recipient globally. Next, if we talk about RBI, right? Who is the chairman or who is the governor of RBI? Sanjay Malhotra. Moving on. Next, Equitas Small Finance Bank partnered with LDV's life insurance for bancassurance services. What is this bancassurance? When a bank and an insurance company, they partner together, and insurance companies sell their insurance product to the customers of the bank, that is bancassurance. So here, which is the bank? It is Equitas Small Finance Bank, that is Chennai Tamil Nadu Bank, and which is the insurance company? LDV's Insurance Company Limited. Next, RBI has extended call money market timings by 2 hours from 1st of July 2025. Right, take a note of this. This is also another interesting development. According to RBI, the call money market will now operate from 9 a.m. to 7 p.m. instead of 9 to 5 p.m. Right, and these revised timings are based on the recommendation of the working group that are chaired by Radha Shyam Rathod, the executive director of RBI. This working group was constituted by RBI, right? The working group that I am talking about is about the Radha Shyam Rathod, right? The executive director of RBI, the working group for which he chairs, right? This was to undertake a comprehensive review of the trading and settlement timing of the financial markets that are regulated by central banks. And RBI clarified that these trading hours for the government securities, foreign exchange and interest rate derivatives will remain unchanged. Right, and the call money market has been extended by 2 hours, which was earlier 7 p.m. right, that is 9 a.m. to 5 p.m. Now it has been extended from 9 a.m. to 7 p.m. That means from 5 p.m. to 7 p.m. it has been extended by 2 hours. Next, Bank of Baroda has launched Bob Flex's systematic deposit plan. This is a new recurring deposit plan that allows the customers to increase their monthly contribution. Next, economy and business students. Reliance Defense secures 600 crore rupees ammunition export order from Germany's Rental. Right, I repeat, Mumbai, Maharashtra based Reliance Defense Limited, a wholly owned subsidiary of Reliance Infrastructure, secured an export order worth 600 crore rupees from Germany based Rental Waffe Munitions, that is GmbH, a leading global defense and ammunition manufacturer. This order is a part of long-term agreement to supply large caliber ammunition over 6 years. Moving on. Next is awards and recognition. Recently, Brand Finance India 100 ranking was released, and Tata Group has retained the top position with $37.6 billion brand value. I repeat, it is Brand Finance. This is London, UK based company, right? An independent brand valuation consultancy firm. They have released India 100 ranking 2025, and it is the total brand value of India's top 100 brands that has surged to $236.5 billion. And here it is Tata Group that has secured the first position and became the first brand to surpass $30 billion with a brand value of $31.6 billion. That is a 10% year-on-year increase. On second position, it is Infosys, right? Came in second place with a brand value rising by 15% to $16.3 billion. At the same time, HDFC Group ranked third here. Then Taj Hotels for the fourth consecutive time holds the title of the strongest Indian brand with a brand strength index 92.2 out of 100 and a AAA rating. This is the rating that means how strong the returns can be from the particular and how safe this particular brand is. Right, here you can see Taj Hotel first, second Asian Paints, then third Amul. And Amul, if you remember students, they are opening also in Spain, where they will be providing milk in Spain, exporting milk to Spain from India.
Moving on, science and technology, Axiom Space, they have launched AX4 mission to ISS carrying astronauts from USA, India, Poland and Hungary. Take a note of this, important student. This is Axiom 4 mission that was recently launched to the International Space Station, and the crew here, it was lifted using the Falcon 9 rocket of SpaceX, and the new Dragon spacecraft, it was named the Dragon spacecraft, it was named Grace, that took them into space. So this is the rocket, right? And this is the top here. So this is the Dragon capsule that was named Grace, and the rocket that lifted them here, it is your Falcon 9, where they went to International Space Station. Interesting thing to remember here is that from India, Subhanshu Shukla was here, who went to the space here, right, at International Space Station. So take a note of this. Coming back, Axiom Space, they have also signed a memorandum of understanding with Skyroot Aerospace to advance space exploration, that is Axiom Space. They signed this MOU with Hyderabad, Telangana based Skyroot Aerospace Private Limited, that is India's leading private space tech launch service provider, to collaborate on enhancing access to the low Earth orbit, research payloads and orbital data centers and future mission to the Axiom station. Next is books and authors. Union Minister Amit Shah, that is our Home Minister, has released a book, that is the Emergency Diaries, Years That Forged a Leader. This was launched during an event in New Delhi to mark the Samvidhan Hatya Divas. That was the second edition of this day. It is to commemorate the anti-emergency movement in India that took place in 1975. This book was published by Bluecraft Digital Foundation Private Limited. Next is important is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, observed on 26th of June. Take a note of this, students, right? And it is to raise awareness about the threats posed by the illicit drug use and promote international cooperation to combat the drug abuse and trafficking. And there is a theme here, students, break the cycle. Break the cycle is the theme here, that is hashtag stop organized crime. Next is International Day in support of victims of torture, observed on 26th of June. This day is observed basically to raise awareness about the, or to create awareness about the torture and the international law and the way of express to solidarity with the survivors of the globe, right? So International Day in support of victims of torture, observed on 26th of June. First time observed in 1998. Next is World Refrigeration Day, observed on 26th of June. This day is observed basically to raise awareness about the importance of refrigeration, air conditioning, heat pump technologies and the professionals who maintain them. Because we see that the temperature is now increasing. It is extremely hot in India right now. So these ACs, these are the one of the source that is keeping the people cool, right? Because of the AC, the food in the refrigeration or refrigerator is kept cold. It is not getting wasted, right? So these are important for human generation in today's world as the temperature is increasing. So to raise awareness about them, this is observed. There is a theme here, that is cool skills. This is the theme here that you need to remember. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, where did Union Minister Rajnath Singh virtually inaugurated the BrahMos Aerospace Integration and Testing Facility in May to strengthen India's efforts to become a self-reliant in defense production. So it is Lucknow, UP, right? So Lucknow, UP, here Union Minister Rajnath Singh virtually inaugurated the BrahMos Aerospace Integration and Testing Facility. Next, in May, Adani Enterprise Limited, the flagship company of the Adani Group, introduced India's first fuel cell truck for mining logistics in Raipur, Chhattisgarh. Mention the type of fuel used in the vehicle. It is hydrogen that has been launched. It was launched by it was launched by Adani Enterprise Limited, right? They have launched this first fuel cell truck for mining logistics in Chhattisgarh, Rajasthan, in Chhattisgarh, Raipur, right? It is hydrogen fuel. Apart from this, remember, NTPC has also launched hydrogen powered buses, right? Where these buses has been launched, they have been launched in Leh Ladakh. Next, Madhya Pradesh and
dash have signed a memorandum of understanding. They Madhya Pradesh and Maharashtra has signed a MOU in Bhopal to implement the Tapti Basin Mega Recharge Project worth 19,244 crore rupees, touted as the world's largest groundwater recharge initiative. So it is Madhya Pradesh and Maharashtra that has signed this MOU. This project will tackle the water security and will ensure sustainable irrigation and strengthen the drinking water supply through groundwater recharge. Next, where was the Inland Waterways Authority of India under the Ministry of Port, Shipping and Waterways established their new regional office in May to strengthen the inland water transport sector in the region. It is in Srinagar, Jammu and Kashmir. Correct? Take a note of it. Next, mention the first Indian city declared beggar free in May 25 following an anti-begging campaign launched in Feb that was recognized as the model project by the Ministry of Social Justice and Empowerment and World Bank. It is Indore, Madhya Pradesh. Next, identify the first American university approved by Indian UGC, Indian University Grant Commission in May to establish an independent degree granted campus in Mumbai, Maharashtra. It is Illinois Institute of Technology, right? They will be establishing their campus in Mumbai, Maharashtra. Name the university that will be establishing their campus in UP. The international university that will be establishing their campus in UP. In UP too, it will be in Greater Noida. Name that university. Next, which state government approved the Ati Koli Duti Pat, a financial assistance scheme for the welfare of tea garden workers in order to provide one-time assistance of 5,000 each payment and temporary worker of the tea gardens in the state. So, which is the state government that has approved this Ati Koli Duti Pat scheme? It has been launched by Assam government. Next, name the innovative veterinary application app launched in May by N.S. Bosseraju, right, who is the Union Minister for Science and Technology for the Government of Karnataka, that was developed by Transduces Technologies LLP. So, what is the name of that innovative application? It is Pathologist. Right? Next. And this application, Pathologist, it is a digital healthcare platform that has been specifically designed to connect pet owners and farmers with licensed veterinarians, clinics and hospitals. Next, according to the data released by the Ministry of Port, Shipping and Waterways in May, 12 major ports of India registered a 4.3% increase in cargo handling from 819 million tons in FY24 to approximately 855 million metric tons in FY25. The two major ports that are Odisha-based Paradip Port Authority and Kandla, Gujarat-based Deendayal Port Authority, they have achieved a historic milestone of breaching 150 million tons cargo handling in FY25. Next, where did Union Minister of State Dr. Jitendra Singh dedicated India's first of its kind public-funded Department of Science and Technology ICGEB Biofoundry during the 31st board meeting of the governors? So it was in New Delhi. He also highlighted that India's bioeconomy has seen an exponential rise from $10 billion in 2024. It has risen to $165.7 billion in 2024. Right? This is 2014, and in 2024 we have seen almost 10 times rise. Next, India's first manned deep ocean mission, that is Samudriyaan, will be launched by 2026 as announced by the Ministry of Earth Science in May. This mission will use manned submersible vehicle, that is Matsya, to reach a depth of 6,000 under the sea with 3 scientists, and hence it is known as Samudriyaan or Matsya 6,000, right? Matsya 6,000. You will also find written this, right? So this 6,000 means it will be going to a deep depth of 6 meters. That means 6,000 meters. That is 6 kilometers below the Earth's surface or below the ocean, right? And here 3 scientists will be going here along with this for supporting various missions and scientific operations. Next, which Indian government ministry in consultation with the Export Inspection Council prohibited the use of several medically important antimicrobials in aquaculture sector in May 2025? It is Ministry of Commerce and Industry. Next, the Department of Science and Technology has launched 5 carbon capture and utilization test beds in the cement industry across 5 states. The pilot facility for these test beds is located where? It is located at Ballabgarh in
Haryana. Next, which state in India recently added 12 new district-specific products to its one district, one product list in May, increasing the total number of products from 62 to 74. It is Uttar Pradesh, that is UP. And if you remember, for this one district, one product, who was launched as the initial brand ambassador when the initiative was launched in UP? So Kangana Ranaut was named as the brand ambassador at that time. Next, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution sanctioned an additional 2.8 million tons for rice for ethanol production under the ethanol blended petrol program. Mention the organization for which rice was allocated. So mention the organization. What is the organization? It is Food Corporation of India, FCI, right? And this is for ethanol production that comes under the ethanol blended petrol. Next, the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited has launched the India's longest rail flyover glider as a part of the Western Dedicated Freight Corridor. It was launched at Kalamboli, Maharashtra. Right? This feat is a part of WDFC project that is aimed at enhancing the freight transportation efficiency, and this marks one of the most complex railway engineering projects in India that showcases the advanced construction technologies and precision planning. Here it is the installation of 110.5 meter open web steel girder that weighs approximately 1500 ton, making it the longest rail flyover girder in India. Next, the government of UP has launched Mukhyamantri Suposhan Abhiyan. This is a campaign that will cross 8 aspirational districts of UP, and it will be combating, as the name suggests, Suposhan. Suposhan is basically nutrition, right? So it will be combating child malnutrition, right? Take a note of this, and it will be launched in the 8 districts here. This initiative will be targeting children aged between 3 to 6 years of age, and it is expected that almost 11.13 lakh children will be benefited with this scheme. Next, the police department of Dash has launched a community outreach initiative that has been named Nai Disha, a path back to learning, that is aimed at to bring school dropouts back into the education system. So it is Delhi, right? Police Department of Delhi. They have launched this Nai Disha, a path back to learning. That initiative, or this initiative, will enhance or allow the students who dropped out from the schools to bring them back to the schools and complete their education. Next, Sangri, a traditional slender bean, recently received the GI tag in the agriculture products category. It is from which Indian state? So, Sangri, it is from Rajasthan. Right? Next, and this Sangri, it grows on the khejri tree. Next, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has released 3 new crop varieties, that is Malviya Manila Sanchit Dhan 1 of rice, Malviya Dhan 105 Sub 1 also of rice, and Malviya Nidhi for mustard, that has developed by Dash for the benefits of the farmers in UP. So simple question is asked that these 3 varieties that has been recently launched, they have been developed by whom? They have been developed by Banaras Hindu University in partnership with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Next, students, is our homework section. Tell me, the first question is, recently ISRO transfer of technology took place of small satellite launch vehicle, and ISRO transferred this technology to which company? This is your homework. Second question, tell me, recently who was honored with the Cyrus's highest civilian honor, that is Grand Cross of the Order of Marquis the Third. Name that individual. Third question, tell me, recently name the 5th fast patrol vessel built by Goa Shipyards Limited, launched for Indian Coast Guard. Name this vessel. Fourth question, tell me, recently Indian Navy has commissioned a stealth frigate. What is the name of this stealth frigate that was commissioned in Russia on 1st of July 2020, that will be commissioned in Russia on 1st of July 2025. Name that stealth frigate. Fifth question, recently what was the rank of India and what were the medals won by India in the Munich ISSF
Shooting Federation World Cup 2025. So tell me the rank of India and the place in medal tally, as well as which country secured the first position in medal tally along with their medals. So these were your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 27 जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। कैबिनेट अप्रूवल्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देन इंडिया का पहला एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली में, जो कि गुड़गांव से कनेक्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम एक एमओयू को डिस्कस करेंगे जो एम्पावर करेगा रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को थ्रू स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात करेंगे, जो कि यूपी में एस्टैब्लिश किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कैबिनेट अप्रूवल्स देख रहे हैं। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया एक प्रपोजल टू सेट अप द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ लीमा बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट सिग्ना, आगरा, यूपी में। पहली चीज़। दूसरा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया रिवाइज झारिया मास्टर प्लान वर्थ 5,940 करोड़ रुपीज़ टू डील विद इश्यूज जैसे फायर, लैंड सब्सिस्टेंस, रिहेबिलिटेशन ऑफ द इफेक्टिव फैमिलीज एंड ऑल। देन थर्ड आ जाते हैं, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज 2 लॉन्च किया गया, जिसमें वनस टू चांदनी चौक कॉरिडोर 2A एंड रमवाड़ी टू वाघोली कॉरिडोर 2B, ये 2 लॉन्च किए गए। चौथा आ जाता है, पास्ड अ रेजोल्यूशन टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एज संविधान हत्या दिवस। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया का पहला एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को लॉन्च किया गया ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इन दिल्ली। राइट, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आपका दिल्ली को गुड़गांव से कनेक्ट करता है। राइट, दिल्ली में द्वारका से गुड़गांव को कनेक्ट करता है। गुड़गांव में कहाँ पर? CPR, देन SPR, देन यही आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, देन गोल्फ कोर्स रोड। राइट, तो ये AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम रहेगा, जिससे आपका जो डाटा है उसमें मॉनिटरिंग करने में डिले नहीं आएगा। राइट, इससे आपका प्रॉपर मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा एंड स्मार्ट एंड सेफर हाईवेज की तरफ हम जाएंगे। ये आपका जो AI स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है, राइट, AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम, राइट, ATMS बोलते हैं इसको, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? इसको डेवलप किया गया है न्यू दिल्ली बेस्ड इनलैंड हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड NHAI ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। राइट, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होगा यहाँ पे, कम डिलेज देखने को मिलेंगे एंड सेफर कम्यूट होगा। 56.46 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 28 किलोमीटर लंबा रहेगा। एंड ये जो ATMS है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ई चलान पोर्टल के साथ, जो दिल्ली का है ई चलान पोर्टल। इससे जो भी वायलेशंस होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे एंड इसके थ्रू आपके घर पे फाइन आ जाएगा कि ये आपका फाइन है, ये आपको पे करना है, आपने ये वायलेशन करा है। राइट, जैसे स्पीड का हो गया, आप रॉन्ग लेन में चल रहे हैं या फिर आप स्पीड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीड यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर अप्रूव्ड है, आप चला रहे हैं 120 130, तो एक जब ऐसे कैच होंगी तो आपका चलान आएगा। NHAI की अगर मैं बात करूँ तो चेयरमैन कौन रहेंगे? संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक MOU साइन किया टू एम्पावर रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू द स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये लॉन्च किया गया ताकि बेसिकली जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे स्किलिंग दे सकें, उनको सर्टिफाइड कोर्सेज हम करा सकें, ताकि उनको चीज़ें सीखने को मिले एंड जब वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करेंगी तो उनको बेनिफिट मिल सके। जब अगर कोई वीमेन एंटरप्रेन्योर है तो वहाँ पर हम उनको मेंटरशिप की प्रोवाइड करा सकें। राइट, ताकि उनको अगर किसी चीज़ में कमी आ रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में कहीं वो कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प की जा सके, उनको फाइनेंस की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराई जा सके। एंड इन दी एंड एम क्या है कि वीमेन
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमें ग्रो करना है, रूरल वीमेन को हमें ग्रो करना है एंड उनको लखपति दीदी बनाना है, राइट। लखपति दीदी मतलब हम उन्हें लाखों, उनको लखपति दीदी हो जाए, वो लाख रुपए यहाँ पे कमा सकें इजीली, राइट। एंड ये सारा किया जा रहा है ताकि अगर वीमेन की ग्रोथ होगी इंडिया में तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। एंड ये जो MOU है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये 3 साल के लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 417 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये यूपी में रहेगा। यूपी में भी कहाँ पर रहेगा? गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा ऑफ यूपी। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या रहेगा बेसिकली कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, ये काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रहेगा एंड इनोवेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ये जो EMC प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसको डेवलप किया जा रहा है अलॉन्ग विद द येडा YEIDA जो कि है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो प्रपोज क्लस्टर है ये स्प्रेड करेगा अक्रॉस एन एरिया ऑफ 200 एकर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 2500 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो UAE एंड इंडिया के बीच में ये CAPE साइन हो रखा है, जिसके बीच में हम देखेंगे कि अब एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप सीरीज लॉन्च की गई है, जिससे इन दोनों कंट्रीज में जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा एंड उनकी हेल्प की जाएगी ताकि वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच रहेगी, राइट। एंड इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगी UAE स्टार्टअप से, UAE स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगी इंडियन स्टार्टअप एंड ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। इवन यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में भी यहाँ पे MOU साइन किया गया है इन दोनों कंट्रीज़ के, ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सके, राइट। जो फैकल्टीज़ हैं वो एक्सचेंज की जा सकें एंड आपके इवन नॉट जस्ट दीज, आपके जो वर्कर्स हैं, राइट, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी यहाँ पे हम एक्सचेंज कर सके, ताकि एक तो कल्चर बेनिफिट होगा, एक तो कि कल्चर हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरा एक दूसरे के साथ मिलके जो कोलैबोरेशन है, जो कॉपरेशन है, वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ईस्टर्न रेलवेज, ईस्ट कोस्ट रेलवे, इनके द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे यात्रा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये एक एप्लीकेशन है उन सभी यात्रियों के लिए जो कि पूरी यथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे 25 जून से 7 जुलाई तक, राइट। आई रिपीट, जो डिवोटीज यहाँ पर पूरी यथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च की गई है। वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन रहेगा पैसेंजर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर CBCA ने इंट्रोड्यूस किया बाई एनुअल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2026। मतलब क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए अब वो साल में 2 बार यहाँ पे बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, जो कि पहले 1 बार देते थे। इससे क्या होता था, मान लो एक बार अच्छे बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया या फिर उसकी कोई भी दिक्कत आ गई, उनको कोई भी इमरजेंसी हो जाती थी, तो उनका पूरा साल खराब हो जाता था। तो ये चीज़ ना हो सके एंड हम जानते हैं क्लास 10 का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे समय कई जगह आपके यूज़ होता है। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा रिलैक्स दिया जाए एंड वो उनका जो प्रेशर है वो कम किया जाए एंड साल में अब इसको 2 बार यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, एक फरवरी में और एक मई में। ये NEP 2020 के अंदर आधारित है। चलिए नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। इफ्को इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राजील। तो ये पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट रहेगा ब्राजील में। इफ्को इसको इस्टेब्लिश करेगा, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। इंडिया इमर्ज करके आया टॉप डेस्टिनेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ $114 बिलियन अकॉर्डिंग टू RBI। अगर हम देखें, इंडिया ने रिसीव किया टोटल ऑफ $114 बिलियन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर्स में 2020 से लेके 2024 के बीच में, राइट। एंड यहीं पे हम देखेंगे दिस इज द हाईएस्ट अमंग द ग्लोबल साउथ इकोनॉमीज एंड इंडिया हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी की। यहीं पे हम देखें तो जो ग्रॉस इनवर्ड FDI था वो $8.8 बिलियन का था अप्रैल 2025 में, जो कि हायर था $5.9 बिलियन से इन मार्च 2025। यहीं पे हम देखें अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस सर्विसेज इट अकाउंटेड फॉर नियरली हाफ ऑफ द ग्रॉस FDI इनफ्लोज एंड ये जो सर्च है इसने इंडिया को पोजीशन कर दिया 16th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द FDI ग्लोबली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम बात करेंगे बैंकरेंस की। बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी जब पार्टनर करती है,
राइट, एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे बैंक कौन सा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, एलडीवीज लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, आरबीआई ने जो कॉल मनी मार्केट की टाइमिंग है उसको 2 घंटे से एक्सटेंड कर दिया है, 1 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएगा। पहले जो टाइमिंग होती थी वो थी 9 बजे से लेके 7 बजे, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। अब उसको एक्सटेंड कर दिया है 5 से 7 तक, मतलब 9 से पहले 7 तक होती थी, अब वो 9 से 5 बजे, 9 से 5 बजे तक होती थी, अब वो 9 से 7 बजे तक होगी। टेक अ नोट ऑफ दिस, 2 घंटे का यहाँ पे हमें एक्सटेंशन देखने को मिला है। ये जो एक्सटेंशन मिला है ये बेसिकली राधा श्याम राव जी जो चेयर करते हैं ग्रुप, वर्किंग ग्रुप को, उस ग्रुप के द्वारा ये यहाँ पे रिव्यू किया गया था फाइनेंशियल मार्केट के, एंड देन ये रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने लॉन्च किया फ्लेक्सी सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान को। ये आपका एक रिकरिंग डिपॉजिट प्लान है जिसके अंदर आप मंथली आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उसको स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। रिलायंस डिफेंस सिक्योर 600 करोड़ रुपीस एम्यूनेशन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम जर्मनीज रेंटल। तो ये 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो इनको मिला है। ये रेंटल बेसिकली जर्मनी की एक लीडिंग ग्लोबल डिफेंस एंड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फर्म रहेगी, राइट। तो रिलायंस डिफेंस को 600 करोड़ रुपए का एम्यूनेशन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला जर्मनी की रेंटल से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे स्टूडेंट्स। ब्रांड फाइनेंस, ये एक लंदन यूके बेस्ड एक ग्लोबल फर्म है जो कि आपकी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है, इंडिपेंडेंट ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है। इनके द्वारा इंडिया 100 रैंकिंग 2025 को रिलीज किया गया जो कि ब्रांड वैल्यू को इंडिया के ब्रांड्स को सिग्निफाई करती है। इस लिस्ट में यहाँ पर हम देखें तो टॉप पोजीशन रही टाटा ग्रुप की, इन्होंने रिटेन किया ब्रांड वैल्यू में टॉप पोजीशन विद $31.6 बिलियन ब्रांड वैल्यूएशन, एंड ये पहला ब्रांड है जिन्होंने $30 बिलियन को क्रॉस किया फ्रॉम इंडिया। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इन्फोसिस लिमिटेड विद $16.3 बिलियन। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है एचडीएफसी विद $14.2 बिलियन। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स की बात करें, तो ताज होटल आता है फर्स्ट पोजीशन पे। फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने टॉप पोजीशन सिक्योर किया स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड से, एंड AAA+ रेटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रेटिंग मानी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ताज पहले, देन एशियन पेंट्स एंड देन अमूल। अमूल से याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन्होंने स्पेन में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है मिल्क को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हमारा ब्रांड एक ग्लोबल जा रहा है अमूल ब्रांड। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आते हैं। एक्सियोम स्पेस मिशन अभी लॉन्च किया गया था, AX4 मिशन। यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया था। US, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी के ये आपके एस्ट्रोनॉट्स थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के शुभांशु शुक्ला भी यहाँ पे इसका पार्ट थे। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एक और चीज़, ये जो रॉकेट था, राइट, एंड इसके ऊपर था आपका ड्रैगन कैप्सूल। ये जो ड्रैगन कैप्सूल था इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम था ग्रेस। एंड ये जो रॉकेट था ये रियूजेबल रॉकेट है, ये है फैल्कन 9, एंड गए कहाँ पर थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। एक्सियोम 4 मिशन का नाम रहेगा, ठीक है। इंडिया से शुभांशु शुक्ला। फिर इसके अलावा एक्सियोम स्पेस, इन्होंने MOU साइन किया स्काईरूट एरोस्पेस के साथ फॉर एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा रिलीज की गई बुक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर। ये बुक का नाम है एन इमरजेंसी, जो 1975 में देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी आर्टिकल 352 का यूज करके। एंड इस टाइम पे जो इमरजेंसी थी उसके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। एंड हम हर साल अब ऑब्जर्व करते हैं संविधान हत्या दिवस, 2nd एनिवर्सरी 2025 में ऑब्जर्व की गई, पहली बार 2024 में ऑब्जर्व किया गया था, राइट। एंड ये बुक को पब्लिश किया गया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2025, या फिर हम बोले 26 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। ड्रग्स का अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि हम क्या क्या ड्रग्स से क्या क्या नेगेटिव्स होते हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग का क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को, राइट, रोकने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन एक थीम याद रखेंगे यहाँ पे, ब्रेक द आइस, #स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये थीम रहेगी।
इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली कि जो विक्टिम्स हैं टॉर्चर के, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, उनको उनकी हेल्प करने के लिए, उनके लिए प्रॉपर लोगों की एक पूरी बेसिकली लोग उन तक पहुंच सकें, उनकी मेंटल जो हेल्थ होती है ऐसे टाइम पे उसके बारे में उनको सेव रख सकें, राइट, उनको मेंटल हेल्थ को सही रख सकें, राइट, उनके खिलाफ सॉलिडेरिटी हम एक्सप्रेस कर सकें ग्लोबली। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, 26 जून को ऑब्जर्व करते हैं। एंड 1987 में 1998 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, 26 जून को। रेफ्रिजरेशन आपका एसी में, फ्रिजेस में, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी राइज पर है एंड एसी हमारा एक इकलौता साधन है जो कि गर्मी से आपको आजकल बचा रहा है। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चे आप भी एसी में बैठे रहते होंगे, राइट, जो कि आज के टाइम पे हमें ये रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिल पा रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड कूल स्किल्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी इस डे की, सो टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया इन भोपाल ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो कि 19,244 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना नया रीजनल ऑफिस इन मई टू स्ट्रेंथन द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द रीजन। तो वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया बैगर फ्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो कौन सी वो इंडियन सिटी है? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश को बैगर फ्री डिक्लेयर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव की गई इंडिया यूजीसी इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के द्वारा। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने वाली है। तो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया एटी कोली दूती पार्ट, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर ऑफ द टी गार्डन्स इन द स्टेट। तो असम के द्वारा यहाँ पे 5,000 रुपये देने की बात की गई टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर। ये वन टाइम असिस्टेंस है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इनोवेटिव वेटरनरी एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मे, जो कि पेट्स, फार्मर्स इनको एंड पेट ओनर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, वो है पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन्स इन FY24 टू अप्रॉक्सीमेटली 855 मिलियन टन्स इन FY25। मतलब हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, राइट। एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है एंड गुजरात बेस्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों ने एक टारगेट अचीव किया ऑफ बिकमिंग और ऑफ कार्गो हैंडलिंग, जो कि है 150 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग का उन्होंने टारगेट अचीव किया है हर साल का। नेक्स्ट, इन में वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री को, राइट। ये 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बायो फाउंड्री है, राइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर डिड इसको लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन होती थी 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इंक्रीज हो गई है, 165.7 बिलियन हमें देखने को मिल रही है 2024 में। एंड इसका टारगेट है कि फर्दर हम $300 बिलियन इकोनॉमी को अचीव कर दें बाय 2030। इसके बाद आते हैं इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान, ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन मे। ये मिशन विल यूज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000। तो मत्स्य 6000 का नाम ही ये है एंड 6000 यहाँ पे डेप्थ को बताता है कि हम 6 किलोमीटर नीचे, जो कि 6000 मीटर के बराबर होता है, इतना नीचे हम समुद्र के अंदर जाएंगे 3 साइंटिस्ट की मदद से, राइट, जहाँ पर हम रिसर्च को कैरी आउट करेंगे।
नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल प्रोहिबिट किया यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटीमाइक्रोबियल्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन मे? तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट। ये जो पायलट फैसिलिटी है टेस्ट बेड की, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बल्लभगढ़ हरियाणा में। आने से क्या होगा? कार्बन कैप्चर होगा, जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में जा रहा था, अब वो यहाँ पे इन सीमेंट इंडस्ट्री में इन टेस्ट बेड्स में कैप्चर किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इंडिया में रिसेंटली ऐड किया 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टू इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 62 टू 74? तो 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं। यूपी के द्वारा ही इनिशियली ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी एंड कंगना रनौत इनकी ब्रांड एम्बेसडर तब अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट? एथेनॉल ब्रांडेड प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच द राइस वाज एलोकेटेड, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर एज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? कलम्बोली, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि एक कैंपेन है अक्रॉस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टू कॉम्बैक्ट व्हाट? टू कॉम्बैक्ट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, राइट? भुखमरी को कॉम्बैट करने के लिए एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ यूपी इसको लॉन्च किया गया है, राइट? एंड यहाँ पर एम है कि ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जाएगी एंड 400 कैलोरीज आपके न्यूट्रिशन स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे डिलीवर की जाएगी, करेक्ट? एंड 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, इनके द्वारा भी एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि है नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसका एम क्या है? जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाना एंड उनकी एजुकेशन को पूरी करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सांगरी, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है, खेजरी ट्री पे ये ग्रो होती है एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है। पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिलीज करी 3 नई क्रॉप वेराइटीज, मालवीय मनीला सिंचित धन 1 राइस की, मालवीय धन 105 सब 1 राइस की एंड मालवीय निधि मस्टर्ड, इनको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स इन यूपी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर को ऑफ रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उन सिटीज़ का नाम बताओ दैट एट विच दीज फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में ये आपकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड डैश एज द एनुअल डे टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हम ऑटोमन इक्विनॉक्स ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन आपका डे एंड नाइट ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है, राइट? जैसे अगर हम बात करें समर सोलिस्टिस की, तो यहाँ पे डे लॉन्ग होता है, नाइट छोटी होती है। विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो डे छोटा होता है, नाइट बड़ी होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, इन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल किया नॉर्थ ईस्ट रीजन के फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल में, राइट? जो कहाँ पर है? जो है दिरांग वैली में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द हिमालयन रीजन एंड कौन सी एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। फिर आ जाते हैं किस कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? वो है सराप चूक कंजर्वेशन रिजर्व, इसको लार्जेस्ट डिक्लेयर किया गया। 1585 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड अ वाटर रिसोर्स एटलस 2025। ये एक एआई पावर्ड जियोस्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसका एम रहेगा टू मॉनिटर, मैनेज एंड कंजर्व द स्टेट्स रैपिडली डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज थ्रू रियल टाइम। तो हरियाणा स्टेट ने लॉन्च किया है वाटर रिसोर्स एटलस को। इससे हरियाणा की जो डिप्लीटिंग वाटर रिजर्व्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको मॉनिटर करके मैनेज किया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल टू एनहेंस द डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर द ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंड न्यू एप्लीकेंट्स। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यहां पर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, रूल 8 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1957, इसको अमेंड किया गया मई महीने में 2025 के, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिल सके फॉर ब्रोकर्स। ये अमेंडमेंट वॉज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा कैरी आउट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने टाइटन किया इंपोर्ट रूल्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया था यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, एंड यहाँ पर जो आपका गोल्ड है एंड सिल्वर है, उसके इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे इलीगल इंपोर्ट्स होते थे, राइट। बाहर से सामान यहाँ पे छुपा के लाया जाता था एंड बेचा जाता था गोल्ड को, तो उसको रोका जाएगा यहाँ पे एंड प्रॉपर चैनल यहाँ पे गोल्ड को इंपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द एआई पावर्ड चैटबॉट, जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा ड्यूरिंग द 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन मई 2025 टू एनहेंस पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट सर्विसेज। तो जेम एआई को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, अभी डीपीआईआईटी, इन्होंने अप्रूव किया 187 स्टार्टअप्स को फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर द रिवैम्प्ड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 80 IAC ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ 1961। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट, जिन्होंने लॉन्च किया 2 इनिशिएटिव, जो कि है वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम एंड ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम। वीमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे वीमेंस को मिलेनर्स बनाने का काम किया जाएगा एंड 1 करोड़ वीमेंस के ऊपर काम किया जाएगा ताकि वो मिलेनर बन सकें। यहीं पे ग्रास रूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम का एम रहेगा कि यूथ को इनोवेशन तक ले जाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को इनोवेशन से जोड़ सकें एंड इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें। तो किस स्टेट ने लॉन्च किए ये दोनों, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किए गए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। टेल मी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इसरो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टुक प्लेस ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड इसरो ट्रांसफर्ड दिस टेक्नोलॉजी टू विच कंपनी? दिस इज योर होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी, रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद द साइरसेस हाइएस्ट सिविलियन honor, that is Grand Cross of the Order of Marquis the Third. Name that individual. Third question, tell me, recently name the 5th fast petrol vessel built by Goa Shipyards Limited, launched for Indian Coast Guard. Name this vessel. Fourth question, tell me, recently Indian Navy has commissioned a stealth frigate. What is the name of this stealth frigate that was commissioned in Russia on 1st of July 2020, that will be commissioned in Russia on 1st of July 2025? Name that stealth frigate. Fifth question, recently what was the rank of India and what were the medals won by India in the Munich ISSF Shooting Federation World Cup 2025? So tell me the rank of India and the place in medal tally, as well as which country secured the first position in medal tally along with their medals. So these were your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.